Hello everyone, this is Dr. Jyoti D. Gulwani with your subject Financial Accounting. Now, we are going to start today with our chapter number 2, that is bookkeeping. How to record our transaction in our books. In bookkeeping, we have to learn, as we have discussed in our syllabus also, we have to learn journal entries, ledgers, as well as our cash book, that is subsidiary books, others, and we have to prepare final accounts of the sole proprietor. Now, as we are going to record our transaction, so firstly we have to identify that which are our cash transaction and which are our credit transaction. So let us firstly understand which are our cash transactions and credits transaction. Starting with number 1, that is cash transaction. You can read it carefully over here also. A transaction in which there is a receipt or payment of cash is a cash transaction, or cash is affected by such a transaction. जो भी ट्रांजेक्शन में आपका या तो रिसिप्ट या तो पेमेंट कैश में हुआ है या तो जिससे आपका कैश अफेक्ट हुआ है, दैट इज नोन एज आवर कैश ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी ओवर हियर नंबर 1. If goods of rupees 500 are purchased for cash, it is a cash transaction. Cash balance is reduced by rupees 500 due to it. आपने अगर कोई परचेज किया है थ्रू कैश तो आपका कैश रिड्यूस होगा, दैन इट इज़ नोन एज योर कैश ट्रांजेक्शन. नंबर 2, if goods are sold for rupees 700 for cash, it is a cash transaction because cash balance increases due to it. आपने सेल्स किया है कैश में तो आपका यहाँ पे कैश इंक्रीज होने वाला है. यू कैन सी ओवर हियर, इफ़ यू आर डूइंग सेल्स तो ऑब्वियसली कैश इज गोइंग टू इंक्रीज, दैन इट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. Number 3 example, you can see paid salary of rupees 3000. This is a cash transaction because cash balance is reduced. If you are going to pay the salary, then definitely your cash is going to be reduced. तो ये भी आपका transaction हो गया cash. Now you can read over here, if bank balance is affected due to some transaction, then it is also a cash transaction. सिर्फ कैश अफेक्ट हुआ तो वो कैश ट्रांजेक्शन होगा ऐसा नहीं है. अगर आपकी बैंक बैलेंस भी अफेक्ट हुई है, then too it is known as our cash transaction. For example, number 4, purchase goods of rupees 5000 and gave a check of rupees 5000 for it. Here the bank balance is reduced and so it is a cash transaction. आपने कोई भी चीज़ खरीदी है और उसके सामने अगर चेक दिया है तो definitely your bank balance is going to be reduced. Then it is known as your cash transaction. In the same way, number 5, a check of rupees 1000 received from a customer is paid into the bank. आपको चेक मिला है 1000 का फ्रॉम अ कस्टमर जो आपने बैंक में पे किया, तो दैट इज़ अ कैश ट्रांजेक्शन. वाई? क्योंकि आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज होने वाला है. तो दिस ऑल ट्रांजेक्शंस आर कंसीडर्ड एज अवर कैश ट्रांजेक्शन which affect to our cash as well as which affects to our bank balance. Then number 2, which are our credit transaction, opposite of our cash transaction. In credit transaction, there is a no receipt or payment of cash immediately. आपको कोई भी पेमेंट या तो रिसिप्ट है कैश ऑन द स्पॉट नहीं मिलता है, बट इट इज़ पोस्टपोन डेट ड्यू टू सम फ्यूचर डेट. लेकिन कोई फ्यूचर डेट में वो एक्सटेंड हो चुका है. इट इज़ अ ट्रांजेक्शन इन विच नो कैश इज एक्सचेंज. ये ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसमें कोई भी कैश एक्सचेंज नहीं हुआ है और कैश बैलेंस इज़ नॉट अफेक्टेड ड्यू टू सच ट्रांजेक्शन. इसमें कोई कैश ट्रांजेक्शन भी आपका अफेक्ट नहीं हुआ है. Under that, you can see the example number 1. Goods of rupees 4000 purchased on credit from Roopkala stores. This is a credit transaction because we do not pay cash immediately in exchange of goods and cash balance is not affected. Clearly it is mentioned goods are purchased on
क्रेडिट फ्रॉम रूपकला स्टोर्स। तो यहाँ पे आपका कोई भी कैश अफेक्ट नहीं हुआ है, तो दैट्स वाई इट इज नोन एज योर क्रेडिट ट्रांजेक्शन। You can see number 2 example also. Goods of rupees 2200 sold to Deepak stores on credit. You have now sold the goods. To whom you have sold? To Deepak stores on credit. So here again there is a no exchange of cash and cash balance is not affected. Hence your transaction is a credit transaction. So these are the certain example where our cash is not affected. So see, in short we can say that if our cash is affected if our bank balance is affected, then it is known as our cash transaction. Where cash and bank balance both are not affected, then it is known as our credit transaction. Now how to determine कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन। क्लियरली आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपका कैश ट्रांजेक्शन है कि ये आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। तो सी you can read over here. In order to determine whether a transaction is a cash or credit transaction, the following points are useful. Number 1, if the word cash or check is mentioned in the transaction, then it is treated as cash transaction. अगर आपके ट्रांजेक्शन में ऐसा वर्ड लिखा है कैश और चेक, then definitely it is your cash transaction. For example, sold goods for rupees cash rupees 720. आपने कैश में गुड्स सेल किए हैं वर्थ रुपीज 720. Here you can see the word cash. That means it is our cash transaction. Then number 2. If the transaction does not mention the word cash but contains only name of the person, it is a credit transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन में ऐसा वर्ड नहीं लिखा है कैश, लेकिन कोई पर्सन का नाम लिखा है, तो वो आपका ट्रांजेक्शन कैसा हो जाएगा? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. यू कैन सी द एग्जाम्पल ओवर हियर. सोल्ड गुड्स टू कीर्ति रुपीज 720. नेम ऑफ अ पार्टी इज गिवन ओवर हियर बट अदर थिंग्स आर नॉट मेंशन. तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नंबर 3, when the transaction does not indicate cash or credit, ट्रांजेक्शन में जब कैश एंड क्रेडिट नहीं लिखा, and does not mention the name of any person, जब कोई पर्सन का भी नाम नहीं होता है, then it must be cash transaction. तो वो कौन सा ट्रांजेक्शन होगा? कैश. कैश एंड क्रेडिट ऐसा मेंशन भी नहीं है, कोई पार्टी का नाम भी नहीं है, तो वो है आपका कैश ट्रांजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स वर्थ रुपीज 720. 720 के गुड्स सेल किए, तो दिस इज अ योर कैश ट्रांजेक्शन. नंबर 4, in a transaction the name of any person is mentioned and also cash received or payment is indicated, then it is a cash transaction. कोई भी ट्रांजेक्शन में कैश भी मेंशन किया है, पर्सन का नाम भी मेंशन किया है, then it is a cash transaction. For example, sold goods of rupees 720 for cash to कीर्ति. कैश ऐसा लिखा भी है, नेम ऑफ द पार्टी इज ऑल्सो गिवन, तो ये आपका कौन सा ट्रांजेक्शन हो गया? कैश ट्रांजेक्शन. तो ब्रीफिंग इट अगेन. When a word cash is written, it is a cash transaction. When a word cash is not written, only name of a party is given, then it is considered as your credit transaction. When the transaction does not include cash and credit, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा है, as well as name of any person is also not written, then too it is your cash transaction. Number 4, name of person is written, as well as you can say here cash is also written, then too it is your cash transaction. So by remembering these rules, you can identify whether it is a cash transaction or it is a credit transaction. Now one example is given over here to identify our cash or credit transaction. So let us say whether the transactions are cash or credit. आपको identify करना है कि आपके transactions cash है कि credit. These are the transaction, these are the answers. So moving further to number 1.
purchase goods for cash. Now see, you can see solution over here. It is a cash transaction. Why? Because goods purchase for cash. ऐसा लिखा है, कैश में खरीदा, तो ये ट्रांजेक्शन कौन सा है? कैश ट्रांजेक्शन. नंबर 2, purchase goods for rupees 500 from for cash from Suresh. Now answer is, it is a cash transaction. Why? Because along with the name person, the word cash is also used. So as per our rules, when name is mentioned as well as when cash word is written, so this is your cash transaction. Number 3, sold goods to Atul for rupees 350. Now you can see in solution, it is a credit transaction. Why? There is a no mention for cash or check. Only name of a person is written. So when only name of a person is written, it becomes your credit transaction. Then number 4, sold goods of rupees 400. So see, you can see the answer. It is a cash transaction because the name of the person is not mentioned as well as the word is also not mentioned that either it is a cash or credit. So this becomes your cash transaction. Number 5, paid rent 350 by check. It's a cash transaction. Why? Because check is mentioned over here. So definitely it is going to reduce your main bank balance. Number 6, purchase goods from Iceland store rupees 250. Now you can see over here, it is a credit transaction because the name of a person is given and there is a no mention of cash or check. तो जब पार्टी का नाम लिखा है और कुछ भी नहीं बोला तो वो हो जाता है आपका credit transaction. तो in this way you can identify your cash or credit transaction. Now if you want to remember, then you can remember it. That what is the exact difference between cash and credit transaction. So number 1, you can see over here, generally cash or check is exchanged in this cash transaction. Check या तो cash का exchange होता है, but in credit transaction there is a no exchange of cash or check. यहाँ पे cash और check का कोई भी exchange नहीं होता है. Number 2, if subsidiary books are kept, then cash transactions are recorded in cash book or in petty cash book. अगर आप subsidiary books बनाते हो तो cash transaction सिर्फ और सिर्फ किस में record होंगे? In cash book only. But if you are preparing subsidiary books में क्या बनता है? एक एग्जाम्पल दे दूँ, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक एंड कैश बुक. ये 5 चीज़ें बनती हैं इन सब्सिडरी बुक. तो इफ credit transactions are there, then it is recorded in sales book or purchase book. So repeating it again, in subsidiary book, cash transactions recorded in cash book and credit transactions are recorded in cash book. In purchase book, purchase return, sales book and sales return book. Number 3, there is a mention of cash or both cash and the name of the person or no mention of cash and person both. या तो ऐसा word लिखा होता है cash, ओके या तो लिखा होता है बोथ कैश एंड नेम, या तो दोनों लिखा होता है नाम भी और कैश भी, और नो मेंशन ऑफ कैश एंड पर्सन बोथ, या तो दोनों का नाम नहीं लिखा होता है, दैन इट बिकम्स योर कैश ट्रांजेक्शन. रिपीटिंग इट अगेन, या तो कैश एक ऐसा वर्ड लिखा होता है या तो दोनों ही लिखा होता है बोथ कैश एंड नेम, या तो दोनों नहीं लिखा होता है, एट दैट टाइम इट बिकम्स योर कैश ट्रांजेक्शन. द नेम of the person is involved, then there is a credit transaction. सिर्फ पर्सन का नाम लिखा है एंड कैश एंड चेक ऐसा कुछ भी नहीं लिखा तो वो ट्रांजेक्शन हो जाता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नंबर 4, नो वन ऑफ द अकाउंट इन्वॉल्व इज ऑलवेज अ कैश और बैंक अकाउंट. दोनों ही ट्रांजेक्शन में ऐसा कुछ नहीं लिखा होता है कैश और बैंक, तो वो हो जाता है आपका कैश ट्रांजेक्शन. वन ऑफ द टू अकाउंट इन्वॉल्व ऑलवेज अ पर्सनल अकाउंट. जब भी आप उधार पे या तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन खरीदते हो तो ऑलवेज वो पर्सनल अकाउंट वहाँ पे होता ही है. नेक्स्ट इज नो डेप्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू कैश ट्रांजेक्शन. यहाँ पे कोई भी डेप्ट क्रिएट बिकॉज योर ट्रांजेक्शन इज ऑलवेज कैश. एंड
अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रिएट्स अ डेब्ट पेएबल और रिसीवेबल। यहाँ पे उधारी होती ही है, या तो लेने की या तो देने की, तो आइदर इट इज़ अ पेएबल और it is a receivable. So in this way you can remember that which are your cash transaction as well as which are your credit transaction. These are only remembering points. So here we are concluding with today's topic. In the next video we will go with the next topic. So till then, stay tuned. Goodbye.